Hello everyone. Hope you all are good. So today we will discuss our the new topic, that is new article. That is PM David Mark. We need to disentangle good subsidies from bad. This is basically ये आर्टिकल freebies से रिलेटेड है, जैसे कि हम गवर्नमेंट जो फ्री सब्सिडीज देती है इन द फॉर्म ऑफ फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी देती है और बहुत सी चीज़ों पे सब्सिडी देती है। कभी कभार गवर्नमेंट फ्री में लैपटॉप साइकिल्स वगैरह भी बांट देती है। तो उसी के बारे में है कि अभी रिसेंटली जो पीएम मोदी ने अपना रिमार्क दिया है कि फ्रीबीज जो है हमारे देश के लिए सही नहीं है, और इकोनॉमिकली भी हम अगर बात करें तो फ्रीबीज हमारे कंट्री के लिए डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है। तो लेट्स सी दी आर्टिकल। सो many in India have been lamenting for quite some time the culture of political populism and freebies. The issue made headlines following the Prime Minister's recent speech calling for an end to this freebies culture. Curbing freebies may now be a policy priority, but freebies mean different things to different people. Disentangling this mixed bag is important for making policy. Freebies typically conjure up images of free televisions distributed by the late. These are the items that were distributed by different politicians, uh, from where freebies, the concept of freebies generated. So yeah, so free television was distributed by Jay Jalitha, free cycles by Nitish Kumar, and laptops by Akhilesh Yadav. This basically to gain the political vote power and uh, so on. So yeah, while these are the most highly visible and discussed freebies, they are physically insignificant compared to the much larger subsidies on फूड फर्टिलाइजर एंड पेट्रोलियम। सो ये जो सब्सिडीज हैं, मतलब मीन्स कि ये जो हमने फ्रीबीज दिए हैं, टेलीविजन साइकिल्स लैपटॉप्स, ये इनसिग्निफिकेंट है, बिकॉज कि इस लॉन्ग टर्म में कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा जितना कि सब्सिडीज हम दे रहे हैं फूड फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम पे। इस पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट होगा, काफी ज्यादा जो जनता को है वो रिलीफ मिलेगा। सो though curbed in recent years, these visible subsidies in the government budget remain a major source of fiscal stress. Fiscal stress हो गया ये बहुत ज़्यादा फ्री सब्सिडीज का। सेकंड, हाँ, तो फिजिकल स्ट्रेस हो रखा है। वेट अ सेकंड गाइस। या सो फिजिकल स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है ये। देन देयर इज अ रेंज ऑफ इनविजिबल सब्सिडीज भी है। इनविजिबल सब्सिडीज जो है गवर्नमेंट के बजट में शो नहीं हो रही है, लेकिन इनका प्रोपोर्शन वेरी लार्ज है। तो ये भी एक जगह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो टेक्निकली ये सब्सिडीज, अब सब्सिडीज की डेफिनेशन आ जाती है यहाँ पे, फ्रीबीज की डेफिनेशन आ जाती है कि टेक्निकली इसे क्या कहते हैं। Technically, a subsidy is the unrecovered cost of any services or good provided by the government. The deficit between the receipt and expenditure of a government department in providing a service is the unrecovered cost of providing that service. That simple है कि रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के बीच का जो, अगर रिसिप्ट ज़्यादा हो जाती है और रिसिप्ट कम और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं तो फिजिकल डेफिसिट क्रिएट हो जाता है। और वही वहाँ यहाँ पे सब्सिडीज के रिलेशन में हो रहा है कि सब्सिडीज दे रहे हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है और रिसिप्ट्स कम हो रही है, तो इसकी वजह से स्ट्रेस ऑन डेफिसिट क्रिएट हो रहा है। इवन इफ नॉट एग्जाम्पल इंक्लूड अनरिकवर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक एजुकेशन। पब्लिक एजुकेशन की जो कॉस्ट है वो अभी तक रिकवर ही नहीं करी जा रही है गवर्नमेंट से। तो ये एक एग्जाम्पल है। हेल्थ केयर, इरिगेशन, पावर, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। अब दिल्ली सरकार जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, तो उसका आपको क्या लगता है कॉस्ट रिकवर हो पा रहा होगा पूरी तरह से? वो डेफिसिट में जा रहा है। तो ऐसी कई सारी चीजें, कई सारी गवर्नमेंट जो होती है वो पॉलिटिकल वोट वोट गेन करने के लिए फ्रीबीज जनरेट कर देती हैं, फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म अब हमारी इकोनॉमी को एज ए कंट्री को सफर करना पड़ता है। सो it will be immediately evident that not all subsidies are equally undesirable. A final category of freebies is pure cash grants for poor household. हम ये भी बात करेंगे कि इसमें
कि सारी सब्सिडीज गलत नहीं है, कुछ सब्सिडीज देश के लिए जरूरी भी हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पुअर. सो लेट्स डिस्कस. Returning to subsidy, the total volume consists of all visible subsidy plus all the invisible subsidies im, implicit in the provision of social and economic services. It consists of visible subsidies plus invisible subsidies. In an exercise undertaken in 2020, the late Sataduru Sikadar and I found that the volume of subsidies as a proportion of GDP comes down with rising per capita income. Yeah, but very gradually. Married goods and fiscal space for reviving growth. Economic and political weekly. ये आर्टिकल होता है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, इसको आप पढ़िए. The total volume of subsidies came down from 13% of GDP way back in 1987-88 to a little 10% by 2015 to 16. 13% से 10% तो हो गई है सब्सिडी almost 30 years later. This proportion is unlikely to have changed very much today, given the slow pace of change. State government provide the bulk of these subsidies mainly for social services like education, health. The central government account for less than 30% of the total subsidy, providing mainly for economic and सर्विसिंग फूड इंक्लूड. स्टेट गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है वो एजुकेशन हेल्थ के लिए करती है, और मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो एजुकेशन सर्विस इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए प्रोवाइड करती है, जैसे कि फूड हो गया. So in the mixed bag of subsidies, some are less warranted than others. From the volume, we separated out a very small number of merit subsidies, which might be warranted in public interest. All government have provided a food subsidy for poor household by bipartisan consensus for decades. It has been increased by the present government as a relief during COVID-19 crisis. Then there is a basic education and health services which have large benefit for society beyond the benefit accruing to the immediate recipient of the service. What economists call externalities fine. इसको ये externalities बोलते हैं, ठीक है, कि expenditure on water supply and sanitation, where again the benefit to society is much larger than the accruing to the immediate recipient of the service. For example, prevention of infection diseases. These four merit subsidies account for only a third of total subsidy. Thus, two-thirds of total subsidy, about 6% of the GDP, are अनवारंटेड फ्रीबीज विच शुड बी एमिनेट. टू थर्ड जो 6% ऑफ द जीडीपी सब्सिडी जो हम दे रहे हैं वो अनवारंटेड है, हमें वो एलिमिनेट कर देनी चाहिए. वो किसी काम की नहीं है, वो फालतू में दी जा रही है जिससे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सरकार का पैसा बर्बाद ही हो रहा है एक टाइप से, अगर मैं फ्रेंकली बात करूँ तो. So, as explained in the article cited above, central and state governments could step beyond their business as usual budget and take bold measures to phase out these unwarranted freebies, along with much of the tax exemptions and concessions, which amounted to 5% of the GDP. 5% ऑफ द जीडीपी अगर सब्सिडीज को हटा दें, फ्रीबीज को हटा दें, 5% ऑफ जीडीपी का टैक्स कलेक्शन हो जाए गवर्नमेंट के पास, लेकिन वो सब्सिडीज की वजह से एग्जेम्प्ट कर देती है, जिसकी वजह से 5% ऑफ जीडीपी का सरकार को नुकसान हो जाता है. अब सरकार सब्सिडीज में दे रही है, वो टैक्स भी कलेक्ट करवा रही है. दैट वुड फ्री अप दी फिस्कल स्पेस, जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में गैप बढ़ रहा है, उसी को हम फिस्कल स्पेस बोलते हैं. This would enable a massive reduction in the combined fiscal deficit of the center and the states, while at the same time stepping out required expenditure on education, health, and infrastructure. The myth of restricted fiscal space simply reflects the missing appetite of the for deep fiscal reforms, which could radically change the structure of central and state government finances. Finally, I turn to the question of income support schemes. Income support schemes की बात करते हैं अब हम. There is a growing demand in many advanced countries which already have large social security schemes to provide a minimum universal basic income. तो काफ़ी सारी schemes हैं बेसिक इनकम के लिए, मिनिमम इनकम प्रोवाइड करने के लिए. दिस डिमांड आर सपोर्टेड बाय ग्लोबल कॉर्पोरेट लीडर्स लाइक मार्क जकरबर्ग एज वेल एज लीडिंग इकोनॉमिस्ट एंड थिंक टैंक्स अक्रॉस द आइडियोलॉजिकल spectrum. Against that background, providing a small safety net for the poor in countries like India which have no social security system is the least
that any caring government can do, especially when the government is foregoing much larger sums of revenue as tax concessions for the rich, and banks are writing off vast sums of non-performing loans, also providing to the rich. मनरेगा is the largest longest standing income support program in India for unemployment rural areas. मनरेगा आप सबको जानते ही होंगे, रूरल पीपल को employment provide करती है. So, but it is often not regarded as such. It entails payments against performance of work. There is also a pure cash grant scheme such as PM Kisan of the central government, and some schemes now being piloted by a few states government. The usual complaint against such scheme is that they artificially raise rural wages, reduce the incentive to search for work. अब मनरेगा है, उसने गारंटी कर दिया कि हम इसको वर्क देंगे, इस वर्कर को हम वर्क देंगे, तो वो अब वो वर्कर जब उसको वर्क मिल गया तो इनिशिएटिव क्यों लेगा कि मैं और वर्क ढूंढूं. अब सरकार ने तो उसको गारंटी कर दिया हमें इतने ये इतना काम करेगा और इसको इतनी वेज देंगे, तो वो और कोई काम क्यों ढूंढेगा, उसको तो काम मिल गया, लेकिन उसके बर्डन किस पे जा रहा है, वो तो सरकार के ऊपर बर्डन जा रहा है. तो ये एक प्रॉब्लम है सच स्कीम्स के लिए. एंड दैट द पुअर ब्लो ऑफ दिस फ्री ऑन लिक्वर, और फिर वो दारू वगैरह पे, नशीले पदार्थों पे उस वेज को उड़ा देगा, तो ये तो नुकसान ही हुआ एक टाइप से. Since Monrega and similar schemes in the states pay much less than the minimum wage, they obviously cannot raise rural wages beyond what is the legal minimum wage anyway. As of for the somewhat patronizing critic that such sport will introduce the poor to not search for work or binge on alcohol, there are now dozens of randomized control trials. Now वही बात है कि अब इसके लिए रेंडमाइज्ड कंट्रोल, इसको रोकने के लिए जो भी प्रॉब्लम थी इसको रोकने के लिए रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स शुरू कर रखे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, लेड बाय द नोबल ल्यूरेट्स अभिजीत बनर्जी के द्वारा और ईश्वर डेवलपर माइकल क्रैमर के द्वारा. दैट डिस्प्रूव सच बिलीव्स, अभी इन्होंने ये मानना भी मना कर दिया. I should specifically mention that the RCT conducted by the well-known women's voluntary organization Seva in Madhya Pradesh, it showed that the very small cash support provided in the villages where the intervention was carried out was spent primarily on seeking better education for children, repairing dwelling huts, and supplementing the very meagre diets of these poor households. तो यही बात है कि इसमें अब एक वो हुआ था कि आरसीडी टेस्ट कंडक्टेड किया गया, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स कंडक्ट किया गया एक वॉलंटरी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, सेवा नाम है जिसका, मध्य प्रदेश के अंदर. और लेकिन इसने एक अपोजिट रिजल्ट ही शो किया है कि ये जो इनकम जो भी ये वर्कर्स कमा रहे हैं ड्यू टू दी मनरेगा और अदर स्कीम्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, तो ये जो इनकम है, वेजेस है, ये स्पेंड करी जा रही है बेसिकली ऑन दी बेटर एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, रिपेयरिंग ड्वेलिंग्स और हट्स, अपने घर वगैरह बनवाने के लिए, अपने डाइट्स को इम्प्रूव करने के लिए. सो यहाँ से ये पता चलता है कि यस, तो कुछ सब्सिडीज सही भी हैं और कुछ सब्सिडीज गलत भी हैं. तो ऑल सब्सिडीज गलत नहीं है, तो जो कि इररेलेवेंट सब्सिडीज हैं, इररेलेवेंट फ्रीबीज है, जो सरकार के ऊपर बर्डन बनती जा रही हैं, जो बर्डन बन रही है जिससे फिजिकल स्पेस बढ़ रहा है, और उसको थोड़ा एग्जेम्प्ट करना, उसको थोड़ा एलिमिनेट करना जरूरी हो गया है. अभी जैसे कि ऊपर बात भी हुई थी, 6% जो था, 6% ऑफ द जीडीपी इररेलेवेंट है, सब्सिडीज इररेलेवेंट फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही है 6% ऑफ द जीडीपी, और तो ये बचाया जा सकता है. और जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का हमारे एक रिमार्क भी अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है कि फ्रीबीज इज नॉट गुड फॉर आवर कंट्री. सो या, this remark is true from the very popular economist point of view. So conclusion is that yeah, we should provide subsidies for the development of country, not to gain the vote of the people to become politically more powerful. So yeah, thank you so much for watching.